Battle lines in Maharashtra have been drawn, and it's a matter of few weeks that people will come to know that who is forming their next government. Will it be again Mahayuti, or it will be Mahavikas Aghadi who will form their government in state? Because if we talk about Mahavikas Aghadi, they are targeting the Mahayuti government, saying they have not done anything for people of Maharashtra, including the farmers. But Mahayuti government led by Eknath Shinde is very much confident, and especially about their one particular scheme which they launched 6 months back, which is called Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana, under which they have given 7,500 rupees, which is somewhere around 1,500 rupees per month to more than 2 crore women. Mahayuti is confident that this particular scheme will fetch more votes and attract more women towards them, especially the women voters, and they will get success in this election. So to know that what exactly is the impact of this particular scheme and how it has impacted, or how it has left a positive impact in the lives of the women, and how the women basically who got benefited from this scheme have utilized this money, we have reached at Thane, which is a home turf of CM Eknath Shinde. We will be interacting many women to know that how they have utilized this money and how do they feel about this particular scheme, and do they really expect that if the government changes in future, will the scheme continue or not? To know that, stay tuned with us. लाडली बहन योजना इतनी सुपर हिट हो गई है कि उनकी हवा तंग हो गई है। लाडली बहना योजना शुरू की थी और रक्षाबंधन तक सभी बहनों के खातों में ये पैसा पहुंचेगा। महिलाओं को कुछ नहीं, जो भाई नहीं देते वो इन्हें न दिया है। ये माझी लाडकी बहन योजना की सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश के हर कोने में चर्चा है। 30-year-old Thane resident Madhuri Jadhav was recently hired as a helper in an Anganwadi. Her primary job is to fill forms for the Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana, under which 1,500 rupees is given by the government every month to women between 21 and 60 years of age. Madhuri admits that initially it was a big task to convince women to sign up for the scheme. इसके बारे में तो हमको पहले मैसेज आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि योजना वगैरह हमारे सबसे बड़े जो रहते हैं, तो उनसे हमको पता चला कि तो फिर हमको काम आया ये सब कि हमको ही भरना है, हमको समझ में आया। यस, तो हमने लोगों की मदद की, उनको जाके बोला कि डॉक्यूमेंट्स जो जो लगेंगे, तो उनको हमने बोला कि ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए, तो हम लोग फिल करके आपको देते हैं सब। उनको हमारे पे ट्रस्ट नहीं था, उनको हम पे ही विश्वास नहीं था कि ये सब ऐसे ही बोलते रहते, ये आंगनवाड़ी वाले कुछ भी बोलते रहते, ये योजना आई, लेकिन कभी उसका लाभ नहीं होता है। तो उन्होंने हमारे पे ट्रस्ट करने छोड़ दिया था पहली बात तो हमको डॉक्यूमेंट्स हमने जब मांग रहे थे, तो हमको उस विश्वास से डॉक्यूमेंट्स कोई दे ही नहीं पा रहा था कि लीजिए करके, कि हर कोई किसी को डाउट ही था कि OTP आ रहा था पहले तो OTP के वजह से हर इंसान घबरा रहा था। वो बहुत सारा स्कैम हुआ उस पर। तो महिला तो छोड़ो, महिलाओं के घर से भी ना बोल रहे थे इस योजना के लिए कि नहीं मत दो डॉक्यूमेंट्स, अपना कुछ भी हो सकता है, ये सब फेक है। लेकिन जब रक्षाबंधन के वक्त पहला जो है वो पहला मैसेज आया, तो फिर सबको पता चला कि नहीं ये फेक नहीं है और सबको इसका लाभ हो रहा है, तो मुझे भी चाहिए। Madhuri, her husband and 2 daughters live in a one-room flat. She has received 7,500 rupees under the Ladki Bahin Yojana so far, and the money is helping Madhuri fulfill her daughter's dream of becoming a gymnast. Her second daughter wants to learn self-defense, which is another expense. स्कूल हो, कॉलेज हो या कहीं बाहर जाना हो, घूमने जाना हो, तभी भी महिला हो या छोटी लड़की हो या फिर कोई भी हो, लेकिन महिला सेफ नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे मेरी लड़कियों को सेफ रहने के लिए उनको सेल्फ डिफेंस सिखाना पहले चाहिए। और मैं इसीलिए मैंने ये सब पैसा सेविंग करके रखा है।
और मैं सोच रही हूँ कि मेरी लड़की को मैं कराटे क्लास सिखाऊं और क्योंकि वो खुद सेफ रहे और कभी कभी दूसरों की भी मदद कर सके, इसलिए मैंने ये सोच के रखा है। और मेरी दूसरी लड़की है, एक्चुअली मुझे 2 लड़कियां हैं, तो मैंने मेरी दूसरी लड़की को उनको और अदर जिम्नास्टिक क्लास ज्वाइन करने के लिए मैंने सोचा है। Madhuri is hoping that the Ladki Bahin Yojana is here to stay and not just a poll promise. She and her husband want to buy their own house in Thane city and the scheme is key to making that a reality. हमें हमारा खुद का घर लेना है 1 BHK, तो इन पैसों से मुझे पूरी मदद तो नहीं होगी, घर लेने के लिए सहायता नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत सहायता मुझे ज़रूर मिलेगी क्योंकि आगे बढ़ पाऊँगी, थोड़ा फार पैसा जमा करूँगी और मैं एटलीस्ट एक तो इसके हफ्ते तो घर के हफ्ते तो ये ज़रूर करूँगी उससे। तो मैं चाहूँगी सरकार किसी की भी हो लेकिन ये योजना शुरू रहे। "55-year-old Nikita Malekar is a homemaker who helps out her husband, a tailor, whenever she can. The Ladki Bahin Yojana allows her to contribute financially to her family and now she's convincing other women to sign up for it. बहुत जब मैंने ऐसे मैं बाहर जाती थी तो ऐसा थोड़ा थोड़ा कान पे आता था कि ये जो योजना चल रही है तो पैसे आएंगे। तो कोई कोई बोलते थे ऐसे कि नहीं आएंगे अभी राजकारण वगैरह ऐसा बोलते थे, लेकिन मैं बोली चलो अभी सब भरे तो अपन भी भरेंगे, हो जाएगा फायदा जरूर होएगा। और मुख्यमंत्री जी कर रहे तो जरूर होएगा। माने मुख्यमंत्री के पैसे अपने खाते में आ गए तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं सबको बताया कि मेरे को पैसे आ गए, आप भी फॉर्म भर लो। Nikita spends some of the monthly installment on household expenses and the remaining amount goes into helping her husband with his tailoring business, including buying a second-hand sewing machine. मैं तो टेलर काम पहले से मेरे आदमी करते हैं, तो मैं बोला मेरे को बिल्डिंग का तो शौक है, मैं बाहर का करती थी पहला, मैं अपने खुद की मशीन लूँगी और फॉल बिल्डिंग का काम मैं चालू करूँगी। मैंने तो सेकंड हैंड में ले लिया और ये काम मैंने चालू कर दिया। और मेरे आजू बाजू के लोगों को भी मैंने बताया कि देखो मेरे को पैसा है, मैं इस पैसे से मैं ये काम कर रही हूँ। Nikita's goal is to have a tailoring shop of her own, and it's schemes like the Ladki Bahin Yojana which can empower women like her to become small-scale entrepreneurs. थोड़ा बहुत तो घर के लिए तो कभी तो इधर उधर हो जाते हैं। अभी अपना एक टेलर वाला काम कैसा रहता है, सीजन पे रहता है, तो घर में भी यूज कर सकती है। और जो मुझे लगा मैंने पैसे घर में खर्च किया तो मेरे को आप दो, मैं ये आगे काम करने वाली हूँ। मैं बोली कि अभी मैं फॉल का काम करती हूँ तो मेरे को फॉल लाने का है, मेरे को दुकान डालने का है, ऐसा मैं सोच के ही पैसा वो कर। तो अभी अपन ना प्रार्थना लेंगे मेरे पीछे सब जन बोलने का। गुरु विष्णु गुरु विष्णु। Vaishali has been working as an assistant at an Anganwadi for more than 20 years. But she also teaches English to children of daily wage workers at her home. बी से क्या आता है? बैग। और बी से और क्या आता है? She too was tasked with convincing women to avail benefits of the Ladki Bahin Yojana. हमने तुरंत फैसला किया कि इस राज्य में कोई बेटी। Her confidence in Chief Minister Eknath Shinde, who also hails from Thane, pushed her to raise awareness about the scheme. उच्च शिक्षण। हाँ, क्योंकि अपना थाना का आदमी है, भरोसे का है, तो चलो बाबा है शिंदे साहब अपने चे तो आएंगे जरूर, वो तो झूठ तो बात नहीं करेंगे। Vaishali teaches children every day, but she herself wants to learn a new skill about computers. However, poor finances and an ailing husband have stopped her from pursuing her dream. मैं 10वीं के बाद मेरी सबसे पहला शादी हो गई। शादी होने के बाद मैंने क्या किया, मुझे ये कंप्यूटर सीखने का था, तो मेरा टाइपिंग हो गया है। मुझे ना कंप्यूटर सीखने का था, बहुत आस थी कंप्यूटर सीखने की, पर ज़रा शादी होने के बाद आदमी की तबीयत खराब होने की वजह से वो इतना अपना पैसे का जजमेंट नहीं जमता था, पैसा नहीं जमता था। तो अभी कैसा सरकार ने की तरफ से जो मुझे पैसे मिले तो मैंने तो पहले टाइपिंग किया था, कंप्यूटर सीखने की बहुत आस थी। अरे एक जन को देगा, एक जन कासेगा। 58-year-old Manikyama Maitre lives in Dharavi, which is known as Asia's largest slum. She works as a house help and earns around 4,000 rupees a month.
She had been banking on the Ladki Bahin Yojana to come to her rescue, but has been left disappointed. Her sisters in Karnataka have been getting the monthly installment, but despite filling the forms thrice, Manikyamma and her daughters haven't received a penny. टीचर ने बालावाड़ी टीचर ने बुलाया, बुला के बोला फॉर्म भरो करके बोला। एक बार नहीं है, दो बार नहीं है, तीन बार भरा। तीन बार भरा। एक बार नहीं है, दो बार नहीं है। क्यों ऐसे 3 बार क्यों? क्या मालूम, मोबाइल में आया मैसेज। तेरा वो बालवाड़ी वाली बोली 3 बार भरना है तुमको। टीचर बोला तेरा कैंसिल हो गया फॉर्म, फिर वापस भरो करके बोला। फिर वापस भरा, ओके करके मैसेज आया। तुमको पैसा आया? नहीं है सर। एक मेरा को नहीं है, मेरा 2 बच्चे लोग भी नहीं है, तीनों को नहीं, तीनों का नहीं। क्या बोला, क्यों नहीं आया करके? टीचर ने बोला वो लड़की का फॉर्म भरेगा तो क्या बोला, वो लड़की का फॉर्म देखो ऑलरेडी है करके आया। कई का है लड़की और आधार कार्ड ये नहीं हो गया, लिंक नहीं हो गया, ऑलरेडी है उसका करके दिखा रहे करके बोला टीचर। Manikyamma was hoping that the money would come in time so she could finally celebrate Diwali. But with no movement on the scheme and prices of essential commodities increasing, it was another dark Diwali for her. इलेक्शन नजदीक आने के बाद में नाचने का चालू करे, 1.5 जन का 7,500 आया। फिर हम लोग को आस नहीं गिरता है, बाजू में रहता है मेरा हाया करके वो सब लोग बोलेगा तो क्या होता है मन में बोल। तो मेरे को एक बताओ, ये 7,500 आया, तुमको दुख लगता है कि तुमको नहीं आया करके? अरे नहीं आएगा तो खुशी आई बाबा, भेजेगा तो साथ में भेजो, नहीं तो नहीं, किसी की नहीं भेजो। ये इलेक्शन नजदीक होने के बाद में आया क्या भेजने के लिए? तुम वोट करता है? हाँ करता है ना। तो इलेक्शन के बाद ये चालू रहेगा आपको लगता है? नहीं है, ये दिखने का दिखावट। An angry Manikyamma is now questioning the timing of the Ladki Bahin Yojana and asking if it's only a poll promise for some women. मुझे बताओ कि अगर तुमको ये मिलता पैसा तो कुछ सोचा था क्या करने का है या इससे क्या करोगे? अरे क्या करता था, घर का संसार के लिए करता था और कुछ क्या करता था, सोना खरीदी करता था क्या वो पैसा से? आता है क्या सोना लेकर? हाँ सोना आता है क्या? अभी ये सोना निवल भी नहीं आएगा सोने का। महंगाई इतना बढ़ गया सर, ऐसा बोलो मत। आस्ती महंगाई इतना बढ़ गया, गैस का भाव 400 रुपये था, 400 जाके 800 हो गए, अभी 800 हो गए, पहले 1200 हो गया था, 1200 होने के बाद में फिर 800 आए। अभी तेल का भाव क्या हो गया, 150 रुपये हो गए। Maharashtra has seen 3 chief ministers and the collapse of 2 governments in the last 5 years. The ruling Mahayuti is banking on one of BJP's tried and tested flagship schemes. After all, Ladki Bahin Yojana, as it was originally called, worked wonders for the BJP in Madhya Pradesh and Haryana and helped them tap into women votes. And they're hoping to replicate the success with the same formula in the second biggest state in the country. Largest and one of the most ambitious scheme was launched from my department, and they gave me a free hand to work, and all my efforts were into making the scheme successful. Fortunately, we have been able to make it successful. Honorable CM Eknathji Shinde sir, Fadnavis sir, Ajit Dada has been very supportive. When and ever I required their guidance, they were available 24/7. So that is the most important thing for any minister who works in any kind of cabinet. I never had that issue of communication. I never had an issue of lack of guidance. So that is the reason the scheme has been one of the most successful schemes. We have been able to reach more than 2 crore 30 lakh women, and they are getting the benefit as well. More than 17,000 crores have been spent on this scheme, and the entire scheme is budgeted of somewhere around 46,000 crores, which is one of the huge responsibilities as well. The opposition has dismissed the scheme as a poll gimmick which is pointless when prices are skyrocketing. Ajit Pawar claims that it is his plan, it was his plan, he wants to give it away. He gave the weight out. Eknath Shinde, I'm pretty sure that he was the first man to come out with posters and banners. You saw near Mantralaya how the banners were put. Anathan Sanath Eknath. Because when we were roaming in the Raigad district, that time we got to know, when we met a few women who also said that we didn't apply for this scheme, but just before Diwali, prices of essential commodities have shot up, and in a way, what is the use of this 1,500 you are giving when you have? That is what I said. That is what a common feeling is, that all essential commodities have gone up by 40%. In a family, it becomes unstable because there is hardly any employment. Their big children are at home.
You are not helping them. But just to buy out, that is what the Supreme Court said. That this is big corruption by the government. I am not saying it. The Supreme Court said it. It is a kind of bribe which you are giving to purchase votes. We are happy that women are getting it. But you planned it at a point when you had lost Lok Sabha elections. Had you given it before Lok Sabha elections, nobody would have doubted your intentions. Now your intentions are under suspicion. The Congress announced 5 guarantees in Maharashtra as part of its manifesto for the upcoming elections. The first is 3,000 rupees per month to women and free bus travel for women and girls under the Mahalakshmi Yojna. The party says that only they care for the welfare of women, whereas the Mahayuti is only interested in votes. आज महाराष्ट्र में बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो वो लाडली बहन योजना जो है उसे बंद करवा देगी. लेकिन जब हमने कभी महाविकास आघाड़ी के नेता या कांग्रेस से बात की तो उनका कहना था कि ये जो 1500 रुपए दे रहे हैं वो बहुत कम है, अगर हम सरकार में आते तो हम इसका अमाउंट जो है बढ़ा देंगे. हाउ डू यू सी दिस? बिल्कुल, अगर आप बात करेंगे कि ये जो सरकार बोल रही है और देश के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, उन्होंने ये सोचना चाहिए था कि अगर उनको ये करना ही चाहिए थी योजना, तो वो 2.5 साल पहले भी कर सकते थे जब उनकी सरकार बनी थी. क्योंकि हमने जो योजना डिक्लेयर की है, चाहे वो महालक्ष्मी योजना हो, चाहे वो कर्नाटका में हो, तेलंगाना में हो, या राजस्थान में 500 रुपये की गैस देने की योजना हो, महिलाओं को जो है वो सरकारी बसों में जो है वो फ्री में, लड़की बच्चियों को जो है फ्री में ट्रैवल करने की मुबा हो, ये सब निर्णय जो हुए वो पहले कैबिनेट में हुए, सरकार आने के बाद न्याय पत्रिका का. लेकिन इनकी जो योजना आई है वो बिल्कुल लोकसभा के इलेक्शन के हार के बाद आई है. और देश के प्राइम मिनिस्टर को इस भी चीज़ का जवाब देना चाहिए कि मध्य प्रदेश की योजना भी ऐसी लाडली बहन उन्होंने शुरू की और फिर इलेक्शन होने के बाद उसको बंद किया गया, तो उसका भी तो उनको जवाब देना पड़ेगा ना. तो ऐसा है कि हम बिल्कुल सोचते हैं महाविकास आघाड़ी कि 1500 रुपया बहुत कम है, महिलाओं को देना है, तो इसलिए हमने 3000 रुपये की बात की और जितनी भी सरकारी बसेस है, ST है, उसमें महिलाओं के लिए फ्री ट्रैवलिंग की बात की है, जो हमने सभी राज्यों में जो है, जो जहाँ हमारी सरकार है उसमें लागू की है. और महाराष्ट्र से But while campaigning in Maharashtra, Prime Minister Narendra Modi warned that if the Mahavikas Aghadi comes to power, they will discontinue the Ladki Bahin Yojana. कांग्रेस माझी लाड़की बहन योजना को बंद करवाने के लिए भांति भांति साजिशें रच रही है. कांग्रेस के इकोसिस्टम वाले लोग इस योजना के खिलाफ कोर्ट तक पहुंच गए हैं. When we roam around Thane city, we met a lot of women who have been benefited by this particular scheme called Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana. We got to know from them that they have utilized this money to upgrade their skill so that they can start some small business and don't have to rely on someone else for financial issue. Few other women basically use this money for their household expense, especially for the education of their children, so that they can have a good degree or say a diploma in a professional course. Other few women have utilized this money to fulfill their dreams. In a way, women, especially in Thane district or in Thane city, have utilized this money in a very positive sense. Now our next stop will be the Raigad district. We will be roaming in the Raigad district's small villages and will be meeting a lot of women who have been benefited by this particular scheme, and will ask them that how they have utilized this particular money which they have got under this scheme, and also what kind of impact this particular scheme have left on their lives. After Thane, now we have reached to one of the coastal districts of Maharashtra known as Raigad. Raigad was once upon a time capital of Chhatrapati Shivaji Maharaj's kingdom. Now we are here and again we will be interacting with women who are the beneficiaries of scheme called Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana. We will be also meeting a group of women and will be discussing that this particular scheme has become the issue of election or it is just a welfare scheme floated by the government like other. So stay tuned and let's go and meet these women. For the last 17 years, Sayali Raut has been running a small snack corner on the Alibag-Nagaon main road. But when it's off-season, she really feels the financial crunch. To sustain her business, she started taking loans from small savings groups.
But now, thanks to the 7,500 rupees she has collected from the Ladki Bahin Yojana, she could buy a cylinder without taking a loan. पहले तो 3,000 आए, बाद में 1,500 आए, बाद में फिर 3,000 आ गए। देखो अभी बारिश का टाइम है तो कस्टमर कम रहते हैं, तो मैंने मेरा इधर दुकान का सिलेंडर ख़त्म हो गया था, थोड़ा सामान ख़त्म हो गया था, घर का रेशन ख़त्म हो गया था। मैंने उस पैसे से सिलेंडर भर दिया, दुकान का सामान भर दिया और घर का थोड़ा सामान भर दिया। बिजनेस बढ़ता था तब मैं चुका सकती थी, जब बिजनेस कम था तो मैं चुका नहीं सकती थी, तो थोड़ा हमको परेशानी होता था। इलेक्शन में तो असर होगा अभी, मतलब जिसको समझ में आ गया है वो तो इस योजना जिसने निकाला है उसको ही वोटिंग करेगा, क्योंकि उसका घर का खर्चा चल रहा है। 66-year-old Shobha Chalke is battling breast cancer. Her children have spent nearly 5 lakh rupees on her treatment. Shobha is thankful that she applied for the Ladki Bahin Yojana because the money that comes into her bank account every month goes a long way in fighting cancer. अजून मी आणले नाहीत, आज मी आणायला जाणार होते, तेवढ्यात मगाशी विधीच्या पप्पांचा फोन आला, मग त्याने म्हटलं विधीच्या पप्पांचा फोन आला, असं असं आहे, ते घरी येत आहेत, लगेच जाऊ नको म्हणून मी थांबले. पण काय करणार आता त्याचा वापर काय माझ्या गोळ्यांनाच होईल ना. कसल्या गोळ्या काय कॅन्सरच्या गोळ्या, तर आम्हाला आणायलाच जायला लागतं ना. बीपीची गोळी चालू आहे, मग त्या औषधासाठी ती उपयोगी येईल ना. शेतीत काम केलं तर फक्त दिवसभराचे 250. But it's not all been smooth sailing with the scheme. Sisters Ranjita Patil and Priya Patre had applied for the Ladki Bahin Yojana. They go to the bank practically every day to check whether the money has come into their account. But every day they return disappointed. One of the common problems is KYC not being updated. बँकेत गेलो तेव्हा आम्हाला सांगितलं काय, आम्ही हे केवायसीचा फॉर्म काढला नव्हता, तो नंतर गेल्यावर काढला आणि तिथे भरून दिला आणि नंतर सांगितलं काय तुम्ही 4 दिवसांनी या. 4 दिवसांनी आम्ही गेलो, परत गेलो, त्यांनी परत चेक केलं, ते परत सांगितलं काय नाही झालं तुमचं, असं झालं. हा, नंतर परत नंतर 8 दिवसांनी गेलो, तरी पण त्यांनी सांगितलं येतील असं सांगितलं. फॉर्म भरला, इथं पोस्टात पण भरला, बँकेत पण भरला, पण मी केवायसीचा फॉर्म भरला, मला पण माहिती नाही भरलाय की नाही. तो श्रावणी काय बोलली, हिच्याकडे भरते असं बोलली, हिने भरलाय वाटतं माझा फॉर्म, हा पाठवला, पण मी परत गेले नाही. Ranjita works as a daily wage worker and earns 200 to 300 rupees a day for nearly 10 hours of work. For her, the 1,500 rupees monthly installment matters, but will not necessarily encourage her to vote this election. नाही आलं तर शेवटी आमचं मत आम्ही फुकट घालवणार नाही, देणार नक्कीच जे ठरले त्यांना देणार, नक्कीच देणार. कोणाला देणार विचारलं तर तसं नाही, आमचं मत आम्ही सांगणार नाही. मी माझं मत तुम्हाला सांगणारच नाही, आहे की नाही. शेवटी माझा प्रश्न आहे. In Alibag, we met a group of women who had their own reservations about the scheme. Some had applied for it, others assumed they would not get anything, so didn't apply. And some are saying that high prices around Diwali have nullified any benefits of Ladki Bahin Yojana. तो मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना जो सरकार ने की, जिसके अंडर 1500 रुपए हर महीने जो है अभी तक 7,500 रुपए दिए गए, आपको पता है इसके बारे में और क्या आपने अप्लाई किया है? मैंने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है जब वो लाड़की बहन स्कीम आई तब सभी जगह पे इतनी भीड़ थी कि पूछो मत. सब महिलाओं को लगा कि मेरे को 1500 रुपये मिलने वाले हैं, पर उसको ये पता नहीं चला कि 1500 रुपया हम लेंगे, उसके ऊपर हमारा पैसा ज़्यादा जाएगा, किराना का, सिलेंडर का. लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे कि अगर 1500 रुपया अब देंगे तो ज़्यादा किराना, कुछ ऐसा सामने आपके मामला आया था कि 1500 रुपये गाँव में मिले और फिर अचानक से कुछ महंगाई बढ़ गई, ऐसा कुछ सामने आया था? हाँ, सामने आया था. 1500 रुपया लिया और उसके बाद सबका भाव बढ़ गया, तेल का भाव बढ़ गया, लहसुन का भाव, कांदा बटा, सबका भाव बढ़ गया. सबको 1500 रुपये सरकार की तरफ से मदद मिल रही है तो आपको नहीं करना चाहिए? सबको मतलब अभी बाकी जो महिलाओं को मिला है, हाँ. तो आपको ऐसा लगा नहीं कि बाकी लोगों को मदद मिल रही है 1500 रुपये, तो मैं अगर अप्लाई करूंगी तो मुझे भी शायद से 1500 मिल जाएंगे? थोड़ा सा ऐसा लगा था कि मैं अप्लाई करूं, लेकिन मैंने किया नहीं है. अभी पता चल रहा है कि सबके दाम बढ़ गए,
तो अच्छा लग रहा है, मतलब मैंने नहीं किया। इलेक्शन आता है उसी वक्त में ऐसी स्कीम निकालते हैं। इलेक्शन के बाद अगर 5 साल तक सरकार कुछ महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं करता। अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए तो ये स्कीम निकाली, उन लोगों को लगा कि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में उनकी अभी सरकार नहीं बैठेगी, तो उन्होंने तुरंत ये स्कीम निकाली। 1500 रुपये दिए लोगों को। मेरे पास मैंने खुद बहुत जन के फॉर्म भरे, बस तो उसमें से 90% महिलाओं के एक्सेप्ट ही नहीं हुए। एक्सेप्ट हुए, अप्रूव हुए तो उनके अकाउंट में पैसे नहीं। महिलाओं को खाली ये थोड़ा सा ये दिया है, वो दिवाली का ये शगुन, भावबीज भेंट, रक्षाबंधन भेंट, एक ऐसा बोल के हाँ गाजर दिखाया है। अभी वो गवर्नमेंट आई है नहीं आए, पर ये स्कीम बंद होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एम्प्लॉय है, हम लोग एम्प्लॉय के लिए टैक्स बहुत ज्यादा जा रहा है, हम लोग को बहुत नुकसान हो रहा है। So if we talk about the beneficiaries, they are really happy with this kind of decision, and they are urging the government that whoever forms the next government should not stop this scheme and continue the scheme. But there is a section of women in the society who is against this scheme because they have an opinion. According to them, instead of giving just mere 1,500, 2,000 or 2,100, the government should more focus on creating jobs for women, because in long run, that will help the women of Maharashtra to become financially independent. This is Mayuresh Ganpate reporting from Raigad with camera person Mana Das for Network 18.